So before proceeding further, please leave a confirmation in the chat box कि आपको जो स्क्रीन है वो नजर आ रही है। अगर आपको स्क्रीन विजिबल है तो आप जो है वो विजिबल जो है वो लिख दीजिए चैट बॉक्स में, सो दैट हम जो है वो प्रोसीड फर्दर करें। इंटरनेट की कनेक्टिविटी के कुछ इश्यूज आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन मुमकिन है कि कुछ सेकंड जो है वो ये ले, या हमारी स्क्रीन जो है वो हो सकता है कि आप पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी देर के लिए गुम हो जाए, तो स्क्रीनशॉट जो है वो साथ साथ लेते चले जाइएगा ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो। कितने लोग ऐसे हैं हमारे पास आज के सेशन में कि जिन्होंने क्लास को ज्वाइन करने से पहले या जो लिस्ट हमने शेयर की है उनको कम से कम एक दफा खोल के देखा है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द बुक्स, ये 70 बुक्स हैं कौन सी जो एग्जिस्ट करती हैं। सो हाउ मेनी आर देयर जिन्होंने आज के सेशन में आने से पहले उनको ओपन करके देखा। सो हानिया इज द ओनली वन हु हैज ओपन द बुक, ओपन द लिस्ट। सिर्फ हानिया ही है या कोई और एस्पिरेंट्स भी हैं? ओके, हानिया और इत्तिका जो हैं दोनों ने देखा। ऑलराइट, ओके जी, ठीक है, fair enough. बहुत many ऐसे have पर्दे कौन सी बुक्स को समझना है। चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जो है वो बढ़ते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपको जो है वो प्रिपेयर क्या करना है, किस तरह से करना है और क्या क्या लगे। पहले आप प्ले प्रिपेयर करते हो, सो whenever you are supposed to whenever you are supposed to play any novel, prepare any novel, whenever you are supposed to prepare any drama, तो जनरली जिन चीजों का आप ख्याल रखोगे, you have to prepare the following things. First of all, go for the summary of that particular text. In case you have not read the text of that book, the summary of that particular book is recommended. So in summary, you will try to maintain the discipline of maximum memorizing 2 to 3 quotations. So once you are done with the summary of any play, for example, आप Oedipus Rex को पढ़ रहे हो, so after reading the summary, you will go towards the characters. And here, when I'm talking about character, I'm talking about characters analysis. So analysis is important here. The third important thing is that in every novel, in every play, in every drama, you are supposed to find out इसके अंदर literary devices किस तरह से और कौन कौन से find out कौन कौन से हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि आप जो है जो कोटेशंस हैं कम से कम 3 कोर्स जो हैं वो आपको होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए कि 3 के करीब कोर्स जो हैं आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनका आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो है वो ऐसी चीजें हैं कि जो आप बिल्कुल समझने की भी कोशिश करेंगे और आप इसको जो है वो ढंग से देखने की कोशिश करेंगे। तो हम जो है को समझने के साथ साथ एक चीज और देखेंगे हमारे पास ये कि आपके व्यूज उसके बारे में क्या है, उस पर्टिकुलर रीडिंग के बारे में। देखिए, जब भी आप कोई भी रीडिंग करते हैं, लिटरेचर इज लाइफ, यू कैन नॉट डिटैच लिटरेचर फ्रॉम योर लाइफ। आपके लिए ये जरूरी है कि अगर आप इसे ये कहा जाता है कि अगर ये लिटरेचर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में सेट किया जाता है कि आप पाकिस्तान में कुछ ऐसा लिटरेचर है जो इससे मुतासिर होकर लिखा गया, तो आपको यकीनन इन तमाम की तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये इस तरह का कोई लिटरेचर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और ये बहुत से इंटरव्यूज का पार्ट रहा है, ठीक है जी, ये बहुत से इंटरव्यूज का पार्ट रहा है जिसमें इस तरह के क्वेश्चन को पूछा गया। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन टैकल करने का तरीका नहीं आता तो हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह से टैकल करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से आप प्रोसीड फर्दर करेंगे। हम जो है आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करें। हर इंटरव्यू में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो वन वे इन अनदर वे वो क्वेश्चन सेम होते हैं, और उन क्वेश्चंस के सेम होने से यहाँ पे मुराद लाइनें सेम नहीं है। मैं जब भी सेम क्वेश्चंस की बात करूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, तो आपने कॉन्टेक्स्ट को हमेशा जो है अपने ध्यान में रखना है। कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी लिटरेरी क्लिमिनेशन।
Okay, ji. The first question from the Oedipus Rex that been the part of previous interview is it a problematic play? If yes, then how? So before proceeding further, I just need your confirmation. Is it a problematic play? I'm talking about the Oedipus Rex. Is it a problematic play? What do you feel about it? Yes, no. What is your answer? Is Oedipus Rex a problematic player? There was a part of previous interview. The thing is, yes, problematic play. Problematic play is a play that is talking about or leading the characters towards the problems. Yes, that is the crux of the question, Ms. Hania, that you need to understand. Nobody is going to explain what is problematic play in the interview. So you need to understand when we are talking about the problematic play, that means the problem of the play. Is it highlighting or indicating in the directions of the tragedy? So yes, here you need to understand कि Oedipus Rex के अंदर जो है वो कहाँ पे कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं कि Oedipus में किस कदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और प्रॉब्लम शुरू होते ही जो है वो आयरॉनिकल चीजों के आयरॉनिकल स्टेटमेंट शुरू हो जाती हैं कि Oedipus जो है वो डिटरमिन है कि लाइस के मर्डर्स को कत्ल करने में और जो हमारे पास सोफोक्लिस के ऑडियंस हैं वो सब जानते हैं कि Oedipus तो in itself जो है वो himself is the murder. So यहाँ से हमें पता चलता है कि एक प्रॉब्लमेटिक प्ले है, ठीक है. सो प्रॉब्लमेटिक प्ले जो है एक ऐसा है जिस प्रॉब्लम एक प्रॉब्लमेटिक प्ले है, आप इसको जो है वो ढंग से यूज करें. द सेकंड क्वेश्चन इज कि जब भी आप समझो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑर्कल. ऑर्कल जो है वो था क्या, इसका रोल क्या था, रोल इन द प्ले. क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. आप जानते हैं कि एंशियंट ग्रीक्स की जब हम बात करते हैं, जब हम रोमन्स की बात करते हैं, तो वो प्लेस या वो मीडियम के जहाँ से डाइटीज जो है वो उनके साथ कंसल्ट किया जाता था, जहाँ से रेवुलेशन होती थी, जहाँ पे कोई भी मीडियम का रिस्पॉन्स आता था, कोई भी प्रीस्ट जो है वो बातें किया करता था, वो हमारे पास ऑर्कल है. सो ऑर्कल के मतलब क्वेश्चन जो है वो पूछा गया. और यहाँ पे स्फिंक्स के कैरेक्टर को भी आप नजर नहीं कर सकते हो कि स्फिंक्स आप जानते हैं कि जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं, स्फिंक्स हमारे पास जो है वो एक मॉन्स्टर थी, उसकी लॉइन की तरह की बॉडी थी, उसका हेड था और उसका जो ब्रेस्ट था वो एक खतून की तरह था. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स अबाउट Oedipus Rex. सो ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि Oedipus Rex में का पार्ट रहे. अब आगे चलते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं. फिर हमारे पास है good question of Oedipus Rex. Chalk समझते हैं कि वो ठीक है. आप क्या समझते हैं कि अगर हम जो है जो कोरस को निकाल देते हैं सारे के सारे प्ले में से, सो डू यू फील कि हमारे पास जो प्ले है उसकी सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस वहीं पर रहती हैं. सो व्हाट इज द रूल ऑफ द कोर्स. सो एंड व्हाट इज द रूल ऑफ द कोर्स. आप इसमें बताओगे कि इसमें व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग एक्चुअली, जो आपको जो है वो क्यों जरूरी था. बैक जो है वो कोई काम करते थे, ऑन स्टेज करते थे, एक्शन को रिफ्लेक्ट करते थे, वो फोर्ड बोर्डिंग को बताते थे, ड्रामा की अनफोल्डिंग को बताते थे. तो इन चीजों के बारे में आप जो है वो बात करेंगे, ठीक है. इन तमाम की तमाम चीजों के बारे में आप बात करेंगे. एक चौथा क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास है आर्टिमिस के बारे में. आप में से कोई जानता है कि व्हेन वी से आर्टिमिस, हु वाज आर्टिमिस. You are just supposed to write yes or no in the chat box. If you know about Artemis, you are supposed to write yes in the chat box. If you feel that you haven't any idea about Artemis, you are supposed to write no in the chat box. So the fourth question is about Artemis. Okay. Well, जिन्हें नहीं पता, Artemis जो है, once again, she is have character है, तो she is the goddesses of the moon. So Greek
अंदर जो है वो शी इज हंटिंग समवन, शी इज द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो। ओके, सो आर्टेमिस जो है ये एक ऐसा करेक्टर जो हमारे पास जो है वो अपोलो की सिस्टर के तौर पर जाना जाता है। सो आफ्टर जब जो है वो हम बात कर चुके हैं आर्टेमिस के बारे में, यू नीड टू नो द बेसिक डिटेल अबाउट द म्यूजिस। आप जानते हैं कि म्यूजिस के बारे में बहुत से क्वेश्चन जो है वो आते हैं, और मिल्टन और बाद में बहुत से लोग इनको इन्वोक करते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूजिस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिस? तो म्यूजिस के बारे में आप जानते हो कि ये 9 गॉडेसेस थी जिन्होंने लिटरेचर को, आर्ट्स को और साइंस को उस दौर के अंदर भी उनके ऊपर ठीक ठाक इनका होल्ड रहा, और इन्होंने बहुत सी चीजों को आउटशाइन किया। हमारे पास मुख्तलिफ हैं, जिनमें से थेलिया नाम हमारे पास है, हमारे पास जो है वो हीलियो है, हमारे पास ओडनिया है, सब देयर आर लॉट मेनी नेम्स, बट इनको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टाइम से भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो म्यूजिक के बारे में आपको नॉलेज जो है वो होना चाहिए कि म्यूजिक जो है वो क्या है। तो इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो हमारे पास था। अच्छा जी, छठा क्वेश्चन जो है अबाउट इडिपस रैक्स, दैट इज ए कोटेशन जो कि सोफोक्लिस की लिखी हुई थी, इसी को एग्जैक्टली उठाया गया था और पूछा गया, और वो ये क्वेश्चन ये था कि व्हाई इडिपस इज मेंशनिंग हिमसेल्फ as a stranger to the story. So what do you mean by stranger to the story? So he's mentioning that I do not know, I'm a stranger to the story. So he's a stranger to the story से क्या मुराद है, what it is indicating, and how you're going to define that, how you're going to mention the details about Oedipus Rex, how he is the stranger to the story. Here you're supposed to mention that, well, in these lines, Oedipus is talking about the murder of Mr. Lais, that was the previous king. So he is determined enough that I'm going to take the revenge of the revenge for the murder of Mr. Lais, as Mr. Lais was my father. So यहाँ पे हमारे पास we have another literary devices. So you need to mention here कि यहाँ पे Oedipus जो है वो he is moving towards identity. And that is the 7th question, by the way. हमने कोशिश की कि इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक अच्छी समझ दे सका। सो व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी इन ग्रीक ट्रेजेडीज? तो आइडेंटिटी क्या होती है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्पेसिफिक टर्म एज वेल। सो 7 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस सो फार फ्रॉम इडिपस ट्रैक्स के इडिपस के अंदर जो है हमें इन चीजों को ये पूछा गया। 8 क्वेश्चन हमारे पास है। इन केस यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन, प्लीज गो ऑन। After some moments I will move on, hide this screen because we will be on another screen. The 7th question is about the metaphorical blindness. So what do you understand by metaphorical blindness? What metaphorical blindness is? What do you understand by metaphorical blindness? So do you have any idea what I'm asking? So if you are supposed to answer the same question, so you know what is metaphorical blindness? Definitely metaphorical blindness is Oedipus is unable to unfold the truth. So he is intensified by anger, he is full of anger, and he is thinking that he is going to take the avenge for the murder of Lais, but what is happening is literal blindness that he himself is the murderer. So blindness to the reality. So metaphor, while answering this question, you are supposed to first of all define what metaphor is and how you're going to relate metaphor with metaphorical blindness. Okay? So ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस हैं यहाँ तक। अब हम जो है आगे चलते हैं। हमारे पास 10 से 15 क्वेश्चन हैं Oedipus Rex में से। We will try to cover all the questions. On number 8, हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है, वो हमारे पास ये है कि इज इट ट्रू कि हमारे पास जो कोरस होता है, कोरस जो है वो डज नॉट ट्रस्ट ऑन प्रोफेसी? So
What do you feel? Chorus does trust on prophecy or it does not? Because chorus is giving you the details of the incidents. So maybe they're not going to give you the exact picture. So chorus क्या देता है? क्या वो आपको excellent depiction देता है? Conflicts की बात करता है? What it is talking about? तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको जो है वो पता होना चाहिए. आपको इनको ढंग से देखने की जरूरत है. Sometimes they did, sometimes they not. And if you are going to say this, definitely you need to highlight when they are giving you the exact picture, when they are giving you the exact details, and when they are not. So it is a difficult statement, Miss Ania. You shouldn't go with this statement because both options. So my recommendation is you need to take a side that yes, a chorus is if you're checking the side that yes, they're depicting the exact picture, maybe you need to take enough references for that. And if you're saying no, they were not, maybe you need to take enough references for that particular claim. Okay. Just give me a second, please. मैं अभी जो है वो कुछ seconds के बाद आपको दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ. क्लास में रहिएगा आप. ऐसा करें कि यहाँ पे एसी ऑन कर दें. Alright, unfortunately, I have to shift myself from one office to another one. We were on generators actually. So I don't know कि आपके वहाँ पे क्या सिचुएशन है इलेक्ट्रिसिटी के और पावर के फॉलोआउट की, बट यहाँ